Dear student, in this lecture we will discuss skewness. A distribution in which the values equidistant from the mean have equal frequency and is called symmetric distribution. वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, वैल्यूज़ जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मीन्स है और फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, उसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस. और यहाँ से जितने एनी डिपार्चर जो है सिमेट्री से वो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं. इन अ परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर होते हैं. एंड द टू टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल एंड लेंथ फ्रॉम द मीन. दीज वैल्यूज are pulled apart when the distribution differed from symmetry, and consequently one tail become longer than the other. If right tail is longer than the left tail, then the distribution is said to have positive skewness. Positive skewness कौन से केस में होता है? If right वाला जो tail है वो longer है left tail से, तो उसको positive skewness. In this case मीन जो है वो ग्रेटर होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होता है मॉड से. इफ लेफ्ट टेल इज लॉन्गर, अगर लेफ्ट वाला जो है वो लॉन्गर है देन द राइट, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज साइड टू हैव नेगेटिव स्क्यूनेस. इन दिस केस मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मॉड. Skewness is the degree of departure from symmetry of distribution. A positive right skewed distribution has a tail which is full in the positive direction. पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, फिगर में आप देख सकते हैं. अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ टेल विच इज़ पुल्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन, जो कि लेफ्ट साइड पे पुल किया गया है, और पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट साइड पे पुल किया गया है. नेगेटिव स्क्यूड फर्स्ट वन आप देख सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड पे फुल किया गया है. नॉर्मल यानी नो स्क्यू सेकंड नंबर जो दरमियान वाला है आप देख सकते हैं, इसमें ये नॉर्मल है, यानी इसमें मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर है. प्लस वन में मीन मीडियन मॉड जो है वो अलग है, मीन लेस है मीडियन से, मीडियन लेस है मॉड से, और बी में तीनों बराबर है. पॉजिटिवली स्क्यूनेस में ये जो टेल है राइट साइड की तरफ पुल किया गया है. इसमें मॉड ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मीन से. Measure of skewness. When the distribution is symmetric, the value of skewness should be 0. Kurtosis defined coefficient of skewness C dot sk as C dot sk is equal to 3 times mean minus median divided by standard deviation. Bowley suggested a formula known as Bowley's coefficient of skewness and is given as Bowley C dot sk is equal to q3 minus 2q2 plus q1 whole divided by q3 minus q1, where q1 is the first quartile and q3 is the third quartile. Kurtosis. Kurtosis introduced the term kurtosis for the degree of thickness or flatness of a unimodal frequency curve. When the peak of a curve becomes relatively high, then the curve is called leptocortic. When the curve is flat, then it is called platycortic. Since normal curve is neither very peak nor very that flat, so it is taken as a basis for comparison. The normal curve is called mesocortic. Describing a frequency distribution. To describe the major characteristic of a frequency distribution, we need to calculate the following 5 quantities: the total number of observations in the data, a measure of central tendency, a measure of dispersion, a measure of skewness that shows lack of symmetry in the frequency distribution, a measure of kurtosis that gives information about its thickness.
It is interesting to note that all these quantities can be derived from the first four moments. For example, the first moment about 0 is the arithmetic mean. The second moment about mean is the variance. The third standardized moment is a measure of skewness. The fourth standardized moment is used to measure kurtosis. Thus, first four moments play a key role in describing frequency distribution. Thank you so much.